ओके, तुम लोग ये क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इंटरेस्टिंग कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है ना, लर्निंग अबाउट द कार्बन एंड एलिमेंट इन विच द इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस बोथ इन एलिमेंट्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। अब यहाँ देखें, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके अंदर, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन molten state. Okay, the most carbon compound are poor conductor of electricity. The most carbon compounds are poor conductor of electricity, as we have seen in chapter 2. ठीक है, from the data, acetic acid, melting point and boiling point. Methane, ethane, chloroform, acetic acid. We find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. ठीक है, we can conclude that the forces of attraction between the molecules not very strong, since these compounds are largely non-conductor of electricity. We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ion. ठीक है, combining capacity of various elements. Let us now look at the electronic configuration of a carbon. The atomic number of carbon is a 6. ठीक है, that would be distribution of electrons in a various shells in carbon. देखो, anion, cation, it could lose 4 electrons forming cation. cation में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव में एनायन होता है। ठीक है, attain noble gas configuration. The simplest molecules formed in this manner is a hydrogen, that of hydrogen. ठीक है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे बन गया HH, तो H2O बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ H2O, ये सारी है। मीथेन हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ CH4, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन आइटम्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है, each carbon atom is bonded to 4 structure. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. Diamond, 3 other carbon atoms giving hexagonal array.
ठीक है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द hexagonal array being placed in the layer one above the other. Two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties. Diamond is hardest substances, है ना, smooth and slippery. Graphite is also very good conductor of electricity unlike non-metals. ठीक है, diamond can be synthesized subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. चलते हैं आगे। वर्सैलिटी, नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन में टू फैक्टर्स होता है। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। ठीक है, सो कैटायंस कहते हैं प्रॉपर्टीज गिविंग राइज टू लार्ज molecules. This property is called catenation. No other elements exhibit the property catenation. ठीक है, हाइड्रोजन which have chain of up to 7 or 8 atoms. Carbon compounds, silicon forms compound with the hydrogen. अच्छा, valency of 4 other atom of carbon, इसका 4 valency होता है। Saturated unsaturated carbon compound, ठीक है, ethane formula. Another compound formed between the carbon and hydrogen is a ethane with the formula C2H6. Can you draw the structure of propane? C3H8. देखो, मीथेन इथेन, पहले मीथेन फिर इथेन फिर प्रोपेन, पहले मिट्ठू फिर इट्टू, मीन, ऐसे कर दो, मीन है ना, मीन। प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, CH4 C2H6, 2 जोड़ दो प्रोपेन में, ये एन वाला है, एन 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 एन, ठीक है ना, इसमें यही है C2H2+2। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बेंजीन। इसमें क्या है ना, ऑल दिस कार्बन कंपाउंड विच contain only carbon and hydrogen called hydrocarbons. Okay, the saturated hydrocarbons are called alkenes. अच्छा, saturated होगा तो alkenes कहलाएगा, और the unsaturated carbon which contain one or more double bonds are called alkanes. Those containing one or more triple bond are alkynes. ठीक है,
बेंजीन में क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। अल्केन में क्लोरीन ब्रोमीन, जैसे अल्कोहल, अल्डेहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, होमोजेनस सीरीज, nomenclature of carbon compound, nomenclature है and a phrase after prefix and suffix, जैसे naming of carbon compounds can be done by the following method. Identify the number of carbon atoms. अच्छा, हेलो, अल्केन, अल्कोहल, एल्ड्रीन, केटोन, अल्कीन्स, अल्काइन्स, ब्रोमोप्रोपेन है ना, क्लोरोप्रोपेन, प्रीफिक्स है क्लोरो, ब्रोमो, सफिक्स है प्रोपेन, ऑल, अल्कोहल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, अरे अच्छा, कंबशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, properties of ethanol. Ethanol is a liquid at room temperature, है ना, commonly called alcohol, यही है ethanol, alcohol and the active ingredients of all alcohol drinks. ethanol, ethanol, पहले मिथेनॉल, इथेनॉल, फिर मिथेनॉल, फिर इथेनॉल। Ethanol is also soluble in water in all proportion. Can be lethal. So long-term consumption of alcohol leads to many health problems. Reaction of ethanols. Reaction with the sodium. सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड बना देगा। अच्छा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड is commonly called the acetic acid and belonging to a group of acid called carboxylic acid, 5 to 8% solution. Unlike mineral acid like HCl, ionized carboxylic acid are weak acid. ठीक है, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। अच्छा, ड्रॉपलेट फाइल आयोनिक, यहाँ पे देखेंगे मिसलेनियस में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक ऐसे होता है, ग्रीस और डर्ट।
Salts are molecules in which two ends have been differing properties. One is hydrophilic. Hydrophilic, that is interact with the water, and with the other hydrophobic, interact with the hydrocarbons. When soap is at the surface of water, the hydrophobic tails of soap will not be soluble in water, and soap will align along the surface of water with the ionic end of water. An hydrocarbon tail producing out of water inside water. Reaction of soap with the calcium and magnesium salts, which cause hardness of water, and hence you need to use large amount of soap. This problem is overcome by using another class of compound called detergent as a cleansing agent. Detergents are sodium salt of sulfonic acid and ammonium salt with chloride or bromide ions. Both have long hydrocarbons. To charge end of this compound do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ion in hard water, thus they remain effective in hard water. Periodic classification of elements. Mendeleev this is period group. You will see that atomic radius decreases from moving left to right along period. ठीक है, this is due to increasing nuclear charge. Due to increasing nuclear charge with the tend to pull electron closer. Nucleus and radius size of the atom. Atomic size will increases down the group. ओके ऐसे करके एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. ठीक है.
इसके बाद एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स में देखें ना, वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये वैलेंसी जो है ना डिपेंड करता है कि आउटर में कितना सेल है, ठीक है। एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ अ एटम। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल, इसको एटॉमिक साइज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है? कैन सी मेटल्स लाइक एज सोडियम, मैग्नीशियम और टुवर्ड द लेफ्ट हैंड। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल, सल्फर, क्लोरीन राइट हैंड, ठीक है। एंड सेमी मेटल और मेटलॉइड्स exhibit some properties borderline elements like a boron, silicon and germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium are intermediate in the properties are called metalloid or semi metals। ये सब है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। दिस पिंक वन, ये सब सेमी मेटल्स हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। Valency cell electron increases across the period। Valency electrons is decreasing because of the outermost are further away। क्या लिखा रहे थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड। Metallic character decreases across the period and increases down a group। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो घटता जाता है पीरियड में। डिक्रीजेस।
इंक्रीजेज डाउन और बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से करेंगे लाइव प्रोसेस।